So, welcome to class number 32 of the ethics theory class. So, आज we are going to study non-partisanship and empathy. So, non-partisanship होता क्या है? So, non-partisanship is a lack of affiliation, okay, towards a political party or not getting biased towards a political ideology. Non-partisanship को हम लोग को public administration के context में बात करना is very important. It is very important that we talk about non-partisanship in the context of public administration. Okay. क्यों? What is the reason? Because आप देखोगे तो इंडिया में दो तरीके की एग्जीक्यूटिव है. एक है टेम्पररी एग्जीक्यूटिव which is the political executive, okay, which influences, which has a lot of power on the permanent executive, that is the bureaucracy. और इस पावर के चलते it is very easy for this political executive or the temporary executive to influence this permanent executive. Okay, ये चीज important है आपको देखना. That's why non-partisanship not being influenced by any ideology, not being influenced by any political privilege. आज के समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चला है. आज के समय में बिकॉज अ लॉट ऑफ सिविल सर्वेंट्स अगर आप देखोगे तो दे आर रिजाइनिंग, ओके, दे आर रिजाइनिंग एंड गोइंग टुवर्ड्स पॉलिटिक्स. आपने देखा एक छत्तीसगढ़ में डीएम थे, देयर वाज दिस डीएम साहब in Chhattisgarh and he quit the IAS and he stood in elections, did not win, and then he got another chance to get back into the IAS but he chose otherwise. तो ये आप देखो, अगर ऐसा होता है, okay, ऐसा होता है कि a lot of IAS officers and IPS officers nowadays are harboring political, okay, are harboring political motivations, are harboring political ambitions. आईपीएस थे यूपी के कैडर के, ओके, कानपुर के एसपी भी रह चुके हैं. आईपीएस थे वो, ही फॉट इलेक्शन ऑन अ पॉलिटिकल पार्टी टिकट, रूलिंग पार्टी के टिकट पे, एंड ही वन. यस, अनामलाई जी जो थे आईपीएस थे कर्नाटक के, ओके. अजीत जोगी का नाम सुना होगा आपने, ही वाज आल्सो एन आईएएस ऑफिसर, ओके. आई थिंक अजीत जोगी इज आल्सो, यस, डीजीपी ऑफ बिहार, वेरी गुड एग्जांपल, ओके. उन्होंने 2009 में भी लड़ा था इलेक्शन. यहाँ देखो, बड़ा एक बहुत एक अच्छा एग्जांपल हर्षित ने बताया कि जो डीजीपी साहब थे उन्होंने 2009 में भी इलेक्शन लड़ा था और अभी भी इलेक्शन लड़ा था. इन 2009 he quit from the service, fought the election, lost the election and then came back in the service. The Mahashay, what he did was he quit the service, lost the election and then returned back. आप मुझे बताओ, will it be possible for him, जब ये कर लिया इन्होंने, चलो ठीक है, he is a human being, okay, he is a वापस क्यों लिया? because it was not accepted. एग्जांपल मैं आप दूं शाह फैसल का. शाह फैसल he had a 6-year long political career. 2015 में, okay, he left I think the IAS. उसके बाद 2022-23 में उसको वापस ले लिया गया. 5 साल 8 साल पॉलिटिक्स खेला उसने, वापस आईएएस बन गया. बिकॉज दैट रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है. और शाह फैसल को दे टुक हिम बैक, ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट इट सेड कि ओके, इफ यू वांट टू कम बैक यू कैन कम बैक. तो ये वाला एक इशू है. जस्ट टेल मी गाइस, ऑलराइट, यहाँ पर आपको मुझे एक बात बताना, विल इट बी पॉसिबल फॉर these IAS officers, these IPS officers to maintain a non-biased, non-partisan, impartial approach towards civil service or towards governance? The answer is no. Okay, the answer is no. Okay, yes, anonymity is out of the window. Problem मैं बताता हूँ क्या होता है. It is basically to get leverage.
civil servant get in partisan activities, okay, get into partisan activity for leverage. आपने देखा होगा there are a lot of MLA and IPS IAS marriages going on. In Kerala there was an example, in Punjab there was an example, right? In, I think in Haryana there is an example. Why it is happening, why the marriages are happening, why that a lot of IPS and IAS all of a sudden in the past 1-2 decades they have started harboring political ambition. Pehle nahi hota tha. I'll tell you one incident. One of my close uh, associates, okay, he told me about this, that in the 1950s and 1960s, when we had just gotten independence, the permanent executive was much more powerful than the temporary executive. And the temporary executive, the MLAs and the MPs, they had to take appointment from the secretaries. Okay, they had to take appointment from the secretaries because we were still carrying the legacy of the colonial times, jahan par British bureaucrats, the ICS, was far more powerful than the elected ministers. तो 1950-60s तक था, बट उसके बाद क्या हुआ, एक तरीके से फ्यूडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, एक तरीके से द पॉलिटिक्स स्टार्टेड टू चेंज इन इंडिया. The politicians became very powerful. Okay, yes. So ये एक issue था. तो now what these IPS and IAS and all the state PCS people are doing, they are harboring political ambition to get leverage, maybe leverage against the system, to indulge in corrupt activities, maybe leverage against their colleagues कि तुम मुझे कुछ बोल के दिखा दे. Okay, ऐसा होता है ना, that I am working with you, मैं कुछ भी करूंगा because I have the backing of so and so ministers. Okay, I have the backing of so and so minister. You tell me anything, I'll show you your place. Yes, it is done by juniors to get leverage over seniors. Okay, it is done by juniors to get leverage. In police, I can give you example. पुलिस में क्या होता है, and there are certain inspector rank officer who do the dirty work. They are highly partisan, they are highly biased, they attend the political rallies, all right, and they are highly biased and they do the dirty work of certain politicians, and they have leverage over their DCP and joint commissioner. They say कि सर बोल के तो दिखा दो, आप आपकी ट्रांसफर मैं करवा दूंगा. So leverage is the main issue here. Why people indulge in partisan activity? Because to get leverage. Okay, leverage बहुत तरीके का हो सकता है. If you are an IS officer and you are suppose married, okay, अभी एक केस आया था ना, that an IPS officer, she got married to a ruling party MLA. So I also, if you guys remember, जो मुझे Twitter पे follow करते हैं, I also wrote that she will not have to worry about her transfers and posting. Yes, correct. About her transfer and postings for the next 5 years. ऐसा भी होता है. So in order to inculcate the attitude of non-partisanism, it requires the administrator to be taught the correct way to interact with the legislators, the partisans, lobbyists, and the public. अगर आप चाहते हैं, if you guys want that your civil servants, they are non-partisan in nature, they are impartial in nature, then you need to teach them the correct way, the professional way. What way? The professional way to interact, okay, with the partisans, with the lobbyists, okay, with the legislators. So there are a lot of SOPs which have been talked about, that only the IAS IPS officers, they are going to meet the legislators in a professional setting, in a set or in a scheduled meeting, if possible in public view. But this is not possible. Why? Because administration is a 24/7 job.
You cannot say to the IAS and the MLA that don't meet at 3 a.m. at his residence, at the MLA's residence or at the IAS residence. He will say, "Bhai, ye administration and governance is a 24/7 job. How can you stop us?" So whatever has been said, or whatever SOPs have been, standard operating procedures have been suggested, they are impractical when it comes to maintaining political neutrality or non-partisanism. All right. Non-partisanship enables civil servant. What are the advantages? Suppose a civil servant is a non-partisan. Okay, he treats equally all the political ideologies and all the political parties. He is treating them equally on an equal footing. So what could be the advantages? Let us see. He can serve, or she can serve fairly and impartially all legislators regardless of their party or their rank. Okay. Suppose you are a SP of a district or a DM of a district, and the MLA is from the opposition party or the MP is from the opposition party. If you are going to have a biased attitude, you might say that, okay, Mr. MLA, jo karna hai kar lo, aapki to sarkar nahi hai. I will not execute because I want the ruling party MLA to win next election. Okay, this also happens that certain civil servants who have a partisan attitude, they stall development to help. Okay, they stall development to help their favorite political party to come to power. Suppose the MLA is from the ruling party and the SP or DM, he harbors feelings towards the opposition party. So what he will do? Yes, he will stop doing the development work. He will sabotage the development work. Okay, and then he will say कि sir काम नहीं हो पा रहा है. And okay, he will start making excuses. Why? Because he wants that in the next election, this MLA or MP should not be re-elected, and my favorite political party, my favorite political ideology should come to the fore. And that is a very deadly thing that can happen to this country. But very sadly this happens. Okay, very sadly this happens. Why? Because mere favorite CM sahab aayenge. When my favorite CM will come, he will make me the DM of the capital. He will make me DM of the largest district. Okay, for political patronage. This is done. A secret deal is made. Yes, correct. Then if a civil servant, is non-partisan, he get the discipline of putting aside one's personal belief when serving the people. I don't believe in a particular ideology. Okay, and that ideology's government is in power. Doesn't matter. It is my duty as a civil servant to dispense my duty. Okay, to dispense my duty. It is my duty to dispense my duty to the people, to do the development work, whatever has been told to me. Why? Because I am part of the executive and I have to execute without any biases. Okay, I have to execute without any biases. So let us talk about non-partisanship with specific context of public administration. कैसे use आएगा public administration में? So non-partisanship enables the administrator to deliver his unconditional and unbiased service to the government of the day and the government after. You are okay, you are in a very powerful position as an IAS officer. You can dispense advice, and on your advice policies are made. Okay, on your advice policies are made. Okay, so here is the thing, that if this advice is biased, you are deliberately giving advice which is for the purpose of sabotaging the administration, so that your favorite political party or favorite political ideology can benefit. So that will be very deadly, not only for the government,
but for the people and the country. Okay, so it helps you to serve the government of the day. और कोई भी गवर्नमेंट आ जाती है तो फर्क नहीं पड़ता है, आपका जो डेडिकेशन है it is the same as a civil servant. Okay, the apolitical, impartial and unbiased working of civil servant is a corollary to the functioning of parliamentary democracy. डेमोक्रेसी में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ ये देखो, डोंट लुक एट द रेस्ट, ओनली सी दिस डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में क्या होता है, that one party comes and the other party leaves, then next election maybe the other party which has been out of power. Yes, so no one ideology can stay in power for long. Okay, no one ideology stays for long. आज अभी एक राइट विंग गवर्नमेंट है इंडिया में, कल को सेंट्रिस्ट गवर्नमेंट होगी, मे बी कल को लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट आ जाए, मे बी फार राइट गवर्नमेंट आ जाए. ओके, तो यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात की है. यू कैन नॉट बी अ पार्टिजान. ये चाइना नहीं ना है. चाइना में क्या है, दे नो, चाइना में ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, दे आर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी. unless and until you are not a member of the communist party, you cannot go to the higher echelons of the Chinese bureaucracy. सपोज मान लो कि इंडिया में सिंगल पार्टी रूल है, बीजेपी का रूल है या कांग्रेस का रूल है, तो ऑल दी पॉलिटिकल, ऑल दी सिविल सर्वेंट्स, द सीनियर सिविल सर्वेंट्स, दे विल बी फ्रॉम दैट पॉलिटिकल पार्टी विच इज रूलिंग द कंट्री. लेकिन इंडिया में क्या है, इट्स अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी माय फ्रेंड. ऑल राइट, it's a parliamentary democracy and it's a multi-party parliamentary democracy. Multi-party, it means that across the spectrum, political parties exist and every ideology has an equal chance of coming to power. ऐसा ही है ना. ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस 70 साल से राज कर रही है, उसके बीच में जनता पार्टी भी आई थी, उसके बीच में कोalition भी आया था, उसके बीच में कांग्रेस लॉस्ट द पावर, फिर बीजेपी आई, है ना. तो अगर नॉन पार्टिजन एटीट्यूड नहीं है सिविल सर्वेंट के अंदर, तो इट इज गोइंग टू कॉस्ट द कंट्री, नॉट द पॉलिटिकल पार्टी. ओके, नॉन पार्टिजनशिप इज की टू प्रोबिटी, rectitude and integrity of civil service. This is self-explanatory. Okay, it ensures that the advice bureaucrats dispense to government of the day is free from any biases and the bureaucrat is free from any fear or favor. Suppose the chief minister, okay, the chief minister calls the civil servant and he asks to, okay, make me a public policy. आप मेरे लिए एक पब्लिक पॉलिसी बना के दें, ठीक है. यू मेक मी अ पब्लिक पॉलिसी. तो व्हाट यू आर सेइंग एज अ सिविल सर्वेंट, इफ यू आर अ पार्टिजान, यू से सर आप ना इस पॉलिसी को ऐसे बना दो. यू मेक दिस पॉलिसी इन सच अ मैनर, ओके, यू मेक दिस पॉलिसी इन सच अ मैनर दैट इट विल हेल्प यू विन इलेक्शन बिकॉज यू आर माई फेवरेट सीएम, यू आर माई फेवरेट आइडियोलॉजी. Okay, but if you are a upright non-partisan bureaucrat, you say, sir, make this policy in such a manner that it will impact the maximum amount of people. I don't care whether you win or lose, that is up to you, that is your headache. Okay, that is your headache, that whether you win or lose. My headache is how majority people can get benefit from a policy. But if you are a partisan policy, you deliberately come and sabotage the policy making process and you say नहीं मेरी सरकार आनी चाहिए या मेरे ओके मेरे फेवरेट सरकार आनी चाहिए, ये सरकार जानी चाहिए ताकि मेरी फेवरेट सरकार आए. ओके, समझ रहे हैं आप. Then what are the characteristics of a non-partisan civil servant? Yes, he avoids any party affiliation and contributions which are done to get undue favors later. Okay, कहीं भी किसी भी political party के साथ वो visibly attached नहीं है. मे बी उसकी वाइफ किसी political party के साथ हो,
but he should be free. Maybe uska spouse, okay, if there is a lady civil servant, तो उसका husband may be a Congress functionary or a BJP functionary, doesn't matter, okay, it doesn't matter. But he or she, the civil servant, should be free from any party affiliation or any kind of contributions which might hinder the policy making or the governance process. This ensures the civil servant has competency to serve not only the government of the day but also any future alternative government. अगर right wing की सरकार है तो आप बहुत अच्छा dispense कर रहे हो administration, but you should have equal competency to serve a left wing government as well, and whatever changes in policy that comes with it. Right wing की policy different होती है, left wing की policy different होती है, yes or no? राइट विंग की सरकार आएगी तो वो डिफरेंट पॉलिसीज लगाएगी, और लेफ्ट विंग की सरकार आएगी तो डिफरेंट पॉलिसीज लगाएगी. द आंसर इज यस. एंड यू शुड हैव द कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट बोथ दोस पॉलिसीज. You should have the capacity to execute flawlessly both kind of policies, both right wing and left wing. Okay. The non-partisan civil servant resolves conflict of interest as and when they arise in an ethical and moral manner. All right. Can low level of social media usage qualify as a point in non-partisan quality? Yes. Okay. Yes, it can. It can. The people who are very much active on social media, the civil servants, they invariably, okay, they invariably become partisan. Okay. ठीक है. Then non-partisan civil servant, यहाँ पर देखो conflict of interest बोल रहा है. अगर if the civil servant is partisan, all right, if the civil servant is partisan, so what will happen? He will not resolve his conflict of interest, rather he will give in to the conflicts of interest. Okay, he will not resolve the conflict of interest, rather he will give in. Okay, he will give in to the conflict of interest. The civil servants provides the same quality of public service to people of all caste, creed, region and religion. Doesn't matter whether you agree with a certain caste or you don't agree with a certain religion. अगर आपके jurisdiction के अंदर वो लोग आ रहे हैं, so it is your duty, okay, to withstand the pressure, okay, to withstand the pressure and deliver governance. It is your duty to withstand the pressure and deliver governance to people who you don't agree to personally. Okay. Issue of politicization of civil services. Let us look into it. क्या है? बहुत बड़ा एक issue है, and this can come as a 10 marker. Very high probabilities there that look into the issue. I told you at the beginning of the class, okay, at the beginning of the class, if you remember, guys, remember I told you achanak se, in the past 2 decades, all of a sudden, a lot of IAS officers, a lot of IPS officers, they are seen to harbor political ambitions. They are seen to harbor political interest. Why? What is the reason? And I told you that things changed from the 1970s and the 1980s. The temporary political executive, it became more powerful than compared to the permanent political executive, which was more powerful during the colonial times. Okay. So यहाँ पर क्या है कि politicization बहुत तगड़ा हो रहा है हमारे कंट्री में. आप देख रहे हो हर तरफ अगर आप देखोगे तो the kind of speeches that are made by civil servants in public addresses has a very partisan or has a very partial overtone. एक अभी एक वीडियो आया था, if you guys remember, from राजस्थान. There was this SDM, state PCS का SDM था, and he was being berated, he was being scolded by the MP
because he went to a public address and he endorsed, this SDM endorsed an opposition MP. वहां पर जाके बोल रहा है कि आपके जो एमपी हैं, करंट एमपी हैं, वो तो कभी आते नहीं है, ये देखिए ऑपोजिशन वाले एमपी है, ये हर बार आ जाते हैं. ओके, एंड ही वाज द एसडीएम. उसका काम कुछ नहीं था, उसका काम कुछ नहीं था, उसका काम था जाके कंडक्ट कराना. ओके, उसका काम था जाके पब्लिक रैली को कंडक्ट कराना और वहां की सिक्योरिटी देखना. लेकिन वो जाके माइक लेके, ओके, वो जाके क्या करता है, माइक लेके, and he started endorsing the opposition MP to the applause of the crowd. Okay, and the ruling MP, who was I think Gajendra Singh Shekhawat from Rajasthan, and he said कि आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले, right? You are a bloody SDM. Okay, you are an SDM. ठीक है, and how dare you endorse a particular political party? आप डिसाइड करने वाले होते हो कि मैं रहता हूं या ना रहता हूं. ओके, एंड ही टोल्ड हिम दैट मेरी ड्यूटी पार्लियामेंट की तरफ भी है, मेरी ड्यूटी मिनिस्टरशिप की तरफ भी है, और आप डिसाइड करोगे व्हाट माय रिलेशनशिप, ओके, व्हाट माय रिलेशनशिप विथ माय कॉन्स्टिट्यूएंट्स शुड बी. एंड दिस एसडीएम वाज नॉट एबल टू लुक हिम इन द आई एंड से एनीथिंग. तो उसकी क्या इंटेग्रिटी तो गई ही. He lost his integrity, he lost his impartiality, and he was also under investigation. ठीक है, तो हर बहुत चीजें प्रॉब्लम होती है. बट ही माइट से, ओके, ही माइट से कि ठीक है, दिस इज अ शॉर्ट टर्म शॉक, लेकिन कांग्रेस की या बीजेपी की सरकार आएगी तो मुझे फेवर देगी. इन द लॉन्ग रन आई विल डू दिस फॉर फेवर. ठीक है. So politicization is a very big issue, huge issue. Okay, huge issue. आपने देखा ईडी का रेड पड़ रहा है on IAS officers in झारखंड एंड छत्तीसगढ़. तो ये IAS officers कौन है? Who are these IAS officers who are getting arrested by ED and their assets frozen? These IAS officers are said to be close to the ruling state party. Okay, the ruling state party. That is the issue why ED is going after them, because they are said to be close to, so they are totally partisan, they are totally partial in their approach, and they help the certain political party members to gain benefits, undue benefits, and that's why ED is arresting them. करियर तो खराब हो गया. पूजा सिंघल का क्या हुआ? ओके, पूजा सिंघल का क्या हुआ? एंड देन दिस आईएएस ऑफिसर्स ऑफ छत्तीसगढ़, नाम अभी मैं नहीं लूंगा, पूजा सिंघल आई कैन से बिकॉज शी इज बिहाइंड बार्स. लेकिन बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स ऑफ झारखंड कैडर और छत्तीसगढ़ कैडर, देयर एसेट्स आर फ्रोजन. ओके, और नहीं, नाम कोट मत करना. नाम देखो, कोट करोगे तो थोड़ा सा क्या होगा, अनप्रोफेशनल लगेगा. यू कैन से एन आईएएस ऑफिसर ऑफ झारखंड कैडर, दैट्स इट. मैं बोलने में बता दे रहा हूं बिकॉज आई हैव टू मेक द क्लास इंटरेस्टिंग, राइट? आपको कनेक्ट कराना है करंट अफेयर से. आप रोज नाम पढ़ते हो पूजा सिंघल का, ओके, पूजा सिंघल मैडम का नाम पढ़ते हो, तो यू कैन कनेक्ट. दैट्स माई, ओके, दैट इज माई एंड ऑफ द थिंग्स. बट अगर आप लिख रहे हो तो यू हैव टू यू नो मेक अ लॉट ऑफ, जो स्टैंडर्ड्स है आपके वो प्रोफेशनल होने चाहिए. तो जस्ट राइट, एन आईएएस ऑफिसर ऑफ झारखंड कैडर was arrested because of her close associations with the party which was power in the state. Okay, who should we name? Just don't name na, just write an IAS officer. तो वो एक तरीके का anecdote हो जाएगा, and that will allow you to maintain deniability as well. आपने तो an IAS officer लिखा, an IAS officer बहुत चीजें हो सकती है. All right, Indian Apple Service, okay, इंडियन ऑटोमोबाइल सर्विस में तो ये बोल रहा था, एक गराज है रांची में. आप ऐसे भी डिनाई कर सकते हो. अगर आपसे कोई पूछे, आप पे कोई डेफेमेशन नहीं लगा सकता है.
लेकिन अगर मैं नाम ही बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट नाम बोल रहा हूँ, नाम लिख रहा हूँ, ओके, और सपोज कोई लिंक आ गया सामने, तो यू कैन नॉट डिनाई इट, आपने तो नाम लिखा है उसका, राइट? जस्ट मेंशन द इंसिडेंट. यस, विवेक इज करेक्ट. You have to maintain certain kind of professionalism while writing the answer, and that I will I will be teaching you when we will be done with our theory part. The relation between political leaders and civil servants play a key role in dealing with contemporary governance and policy making. This is true. And in the Indian context, the political executive holds power over the civil services, which includes the issue of politicization. एक बहुत बड़ा एक इशू है यूके में, अगर आप जाओगे तो वहां पर इतना एक बड़ा इशू नहीं है, यूएस में भी इशू नहीं है. ओके, यूके एंड यूएस का अगर मैं एग्जांपल दूं तो वहां पर यूके में डेविड कैमरन जो था, ही वेंट टू एनएचएस, और वहां पर एनएचएस इज दी गवर्नमेंट, उनके गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जैसे अपना है ना सीजीएचएस टाइप का, वैसे एनएचएस है, बट एनएचएस कवर्स द इंटायर पॉपुलेशन. एंड ही वेंट टू एन एनएचएस हॉस्पिटल, और वहां पर उसको डांट पड़ी, डेविड कैमरन को डांट पड़ी थी बाय अ गवर्नमेंट डॉक्टर, एंड ही सेड गेट आउट ऑफ माय वार्ड. आप समझते क्या हो, इस तरीके से जूते पहन के आप कैसे आ गए अंदर, बिकॉज दिस इज अ हाईली सैनिटाइज्ड वार्ड, और आप कैसे आ गए जूते पहन के. एंड डेविड कैमरन अपोलोजाइज्ड टू दैट गवर्नमेंट डॉक्टर, बिकॉज इस तरीके का पॉलिटिसाइजेशन वहां पर नहीं है. आप अगर देखोगे यूएस में तो सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, इनको पुलिस रोक लेती है. पुलिस आर नॉट, एंड दे से दैट यू आर वायलेटिंग दिस लॉ एंड आई हैव टू चलान यू, और आई हैव टू गिव यू अ टिकट. वो इंडिया में पॉसिबल नहीं है. व्हाई? बिकॉज यहाँ पर जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है दैट दे होल्ड इमेंस पावर, दे होल्ड immense power over the lives and over the career. Okay, over the lives and over the career of civil servants. That's why people are very fearful. Okay, people are very fearful of this thing. Thus bureaucrats becomes vulnerable to the wrath of politician if they raise their voice against deficiencies in the system. और एक और इसका उल्टा प्रॉब्लम है that if they do not raise their voice, they become on the receiving end, and they become complicit in the schemes, in the bad schemes, in the what should be the word, in the dishonest schemes. Okay, in the dishonest schemes of the politician, they become sort of complicit. अगर आप अपनी आवाज उठाओगे, you can get transferred, your career will be in jeopardy. अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाओगे, you become complicit in the dishonest schemes. तो करे तो क्या करे? That's the issue. On the other hand, civil servants stand the chance to lose their integrity if they blindly follow the will of politicians. Is absolute political neutrality and non-partisanship possible in today's day and age? This question might be asked to you. Okay, you have to prepare for this kind of question as well. So the traditional concept of civil services neutrality is based on the administration politics dichotomy. Okay, ये neutrality किस पे based है? Administration और politics के separation पे. That administration will be different and politics will be different, but in reality this dichotomy is not there, this separation is not there. In recent time, policy formulation has become a persuasive process and cooperative endeavor. Okay, आपको multiple stakeholders के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है, तब जाके कोई पॉलिसी बनती है. आपने देखा फार्म लॉज में क्या हुआ, फार्म बिल्स में क्या हुआ, आपने देखा दे हैड टू टेक इट बैक. ओके, दे हैड टू टेक द बिल बैक. यस,
neutral bureaucracy in the current context seem like a highly idealized notion. Okay, क्योंकि cooperative endeavor बन चुका है, it by nature it has become politicized. Okay, by nature it has become politicized. तो आप as a civil servant cannot escape you cannot escape politicization. आपको एक स्टैंड लेना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई किसी भी तरीके की पॉलिसी नहीं बनेगी. In reality, civil servants are professionally involved in political decision making. आपने देखा झारखंड वाले केस में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, that certain IAS officers, they are now hounded. Why? Because they were in cahoots with their political masters. And आप इग्नोर नहीं कर सकते हो. अगर आपको करियर में ऊपर जाना है, ओके, अगर आपको करियर में ऊपर जाना है, you have to have some kind of political godfather. Okay, you need to have a political godfather for the same. Okay, like any other interest group in society, bureaucracy as a group also has its own interest and aims. आपको पता है ना, IAS एसोसिएशन होता है हर स्टेट में, IPS एसोसिएशन होता है, ऑल इंडिया लेवल पे भी होता है और स्टेट लेवल पे भी होता है ना. An IAS association and IPS association, they have their own interest कि हमें सर एक टेनिस कोर्ट बनवा के दे दो, हमारे बच्चों के लिए फुटबॉल फील्ड बनवा के दे दो. हाँ, एक तरीके से एक इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप है, राइट. आप हमारे लिए गाड़ी का इंतजाम करा दो. अभी एक हाल में एक स्टेट है, उनको उनके सारे IAS ऑफिसर्स को किया की कार्निवल मिली थी. All the IAS officers, they put pressure on the state government. They came together in a group, in an association. They put pressure saying कि सर जो हमें वो है ना टोयोटा की वो जम नहीं रही, इनोवा was the car, and they said कि सर इनोवा जम नहीं रही, तो उनके लिए किया कार्निवल आई थी, 60-70 किया कार्निवल आई थी. Yes. सो उनका भी एक वो रहता है कि हमारे ओके ये सर आएंगे, ये पॉलिटिकल मास्टर आएंगे, स्टेट फंड से, आप ही के पॉकेट से आया है, टैक्स पेयर्स के पॉकेट से आया है, तो उनका भी रहता है IAS IPS एसोसिएशन का, दैट इस तरीके से अगर हम प्रेशर करेंगे तो हमारे फेवरेट पॉलिटिशियंस हमारी बात मानेंगे. Many bureaucrats join political party and contest elections after their retirement. That is also an issue. तो अपने करियर के समय they favor certain political party ताकि retirement के बाद they will get a ticket to contest elections. While neutrality is an ideal state, in practice absolute neutrality is difficult due to ground realities. Due to ground realities, absolute neutrality is very difficult. Second ARC report has recommended that the onus of preserving the political neutrality and impartiality lies equally on the political executive and the civil servants. दोनों को देखना है कि कैसे मैं politicization of bureaucracy नहीं होने दूं. Both the political executive, the temporary executive, the MLAs and MPs, and the civil servants have to keep this in mind. Okay, judicial officers are public servant from the conventional, no, they are public servants. Judicial officers are also public servants, और वहां पर भी politicization होता है. Certain judicial officers are biased towards the functionaries and towards the ideology of a particular political parties. तो उनके तरफ, उनके फेवर में they give the judgment. Okay, अब हम आते हैं एम्पैथी पे. एम्पैथी क्या है? एम्पैथी मींस फीलिंग विथ समवन irrespective of positive और नेगेटिव फीलिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फीलिंग विथ. ओके, फीलिंग विथ. आपको याद है जब हम कंपैशन पढ़ रहे थे तो मैंने ये डायग्राम आपको समझाया था, ये पिरामिड समझाया था. यू गाइज रिमेम्बर कि सिंपैथी के बिना एम्पैथी पॉसिबल नहीं है, और एम्पैथी के बाद कंपैशन आता है, एंड कंपैशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सिंपैथी. याद है आपको? तो हमने क्या बताया था, सिंपैथी, राइट?
तो यहां पर सिंपैथी क्या है? फीलिंग फॉर समवन। एम्पैथी क्या है? फीलिंग विथ समवन। एंड कंपैशन क्या है? एक्टिंग ऑन द फीलिंग। कंपैशन हमने पढ़ा था ना बुद्धा के पर्सपेक्टिव से, दैट अगर कंपैशन होता है तो जो दुख में होता है या जो इशू में होता है, जिसका कोई भी इशू होता है, दैट इशू गेट्स रिजॉल्व्ड बिकॉज ऑफ द कंपैशन ऑफ अदर्स। सो sympathy is the most basic feeling. After sympathy, person becomes an empath, and after that he becomes compassionate. So compassion is the highest form, sympathy is the most basic form. Sympathy में feeling for someone, उसको चोट लग गई, अरे बेचारा। एम्पैथी फीलिंग विथ, अरे यार उसको चोट लग गई, बहुत दर्द हुआ होगा, मुझे भी चोट लग जाती तो दर्द होता। कंपैशन, लेट मी पुट अ बैंडेज जहां पर भी उसको चोट लगी है। ओके, so I think this diagram is clear for you. कोई इसमें दिक्कत है? लास्ट टाइम आई थिंक देयर वर फ्यू क्वेश्चंस हियर। एनीवन अभी भी नहीं समझ में आई ये वाला डायग्राम? तो अभी बताओ मुझे। एनीवन? एनीवन? सबको क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। So empathy is an individual's capability to put himself in a condition that he/she can mingle with the feelings of others. बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों के फीलिंग्स के साथ आप मिंगल कर सकते हैं, आप उनको फील कर सकते हैं, दूसरों के फीलिंग्स को। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्पैथी क्या होता है? कॉग्निटिव एम्पैथी होता है, इमोशनल एम्पैथी एंड कंपैशनेट एम्पैथी। ओके, एंड व्हेंस इट इवॉल्व्स, एम्पैथी इवॉल्व्स, यू कैन फील कंपैशन, और कंपैशन जब होता है यू कैन एक्ट on the empathetical feeling. Okay, empathy is a quality which lies at the heart of our concerns for others. आप कंसर्न है ना कि मान लो कि किसी ने खाना खाया है कि नहीं, आप कंसर्न है क्या? यू नो, सपोज किसी, कोई बीमार है, so one of your friend is undergoing a surgery या इस टाइप से, तो you feel empathy that okay, क्या उसने खाना खाया होगा, how was the surgery, दर्द भी हो रहा होगा, right? Empathy involves putting oneself in the shoes of others. तो ये shoes actual shoes नहीं है, this is a metaphorical shoe. shoe मतलब कि उसके पर्सपेक्टिव से आप चीजों को देख रहे हो। एक गरीब है, गरीब को सपोज 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है। ओके, a labor is there and he isn't able to get two square meals a day. So you, rather than feeling sorry for him, the labor, you get into his shoes, his metaphorical shoe, and see कि अगर मुझे 2 बार खाना नहीं मिलता, अगर मुझे 2 बार, तो मुझे तो बहुत भूख लगती। And once you feel that way, the next stage is compassion. Then you will give him some money, then you will give him some food. But till the time you are not giving him some money or giving him some food, the feeling that okay, agar mujhe khana nahi milta 2 time, so what would have happened to me, that is empathy. Am I clear? Yes, empathy is one of the core, not the aspects, it is one of the core aspects. An empathetic person understands the nature of other people's problem, its causes and the consequences. Okay, दूसरों के प्रॉब्लम का नेचर क्या है, what lies at the core of those problems, उसके causes क्या है, and what are the consequences. Empathy is not antagonistic to logic and reason, it also has a rational element. अब हमको ये लगता है कि empathy is a highly subjective emotion. Okay, empathy is a highly subjective emotion, but ऐसा नहीं है, वो उसमें एक rational element भी है. And what is the logic? Because fairness, justice or interdependence are involved in empathy, it is considered rational in nature. Fairness है, justice है, और interdependence है,
all of them requires empathy and all of them are rational elements. So empathy by nature has a rational side to it. Importance क्या है empathy का governance में? Empathy is considered to be one of the chief ingredients. अभी पूछ रहे थे आप, so वो है emotional intelligence का chief ingredient which public administrator need for efficient functioning of the system. उससे क्या होता है, social harmony present होती है. अगर आपके पास empathy है तो you can maintain social harmony in your district, in your subdivision, in your block, okay, as a civil servant. Especially in a highly diverse country like India, empathy is very important. Empathy plus tolerance. Empathy plus tolerance is very important in a highly diverse country like India, which has varied customs, varied religions, varied castes, varied classes. Empathy helps in providing inclusive governance and better interpersonal relations among civil servants and the public. एम्पैथी क्या करता है, आपको तो इंक्लूसिव गवर्नेंस की तरफ ले जाता है. ओके, एम्पैथी आपको एक इंक्लूसिव गवर्नेंस की तरफ ले जाता है, बिकॉज एम्पैथी होगी तब आप वल्नरेबल सेक्शन को हार्ट पे लेके चलोगे. ओके, वल्नरेबल सेक्शन को आप हार्ट पे लेके आगे बढ़ोगे. ठीक है, और एक बेटर इंटरपर्सनल रिलेशन अमंग सिविल सर्वेंट और पब्लिक के बीच में एक अच्छा रिलेशन एस्टैब्लिश होगा. बिकॉज when the civil servant who are in the powerful position, they will feel empathy, so they will look after the public which has a major chunk of vulnerable population, especially in a poor country like India, जिसका अभी भी per capita income बहुत कम है, लोग बहुत सारे गरीब, below poverty line रहते हैं. That's why empathy is important, and empathy is important especially in civil servants. Okay, so this was your lecture, and we are done with aptitude and foundational values for civil servant.